hi guys. So today's market around 3 o'clock. Our Onida Chacha came. Onida Chacha morning में ऊपर मारे. So always remember guys, don't blindly follow anything. रुके रहो, समलो, and just watch out our jail bar. So tomorrow I think it's a very narrow CPR. So tomorrow it's a narrow CPR and it's a ascending. It's an ascending CPR. Okay. One minute. So tomorrow it's a narrow CPR as well as it is an ascending CPR. So in this scenario, if the candle is opening somewhere over here, then the uptrend can happen. Or if the candle is opening below this line, then still the downtrend can be possible. Okay, that's the logic. And tomorrow, the major thing is like it's a narrow or yaad rakhna. If the candle opens somewhere over here, it will go and touch the previous day high line. And if the candle is opening tomorrow around this line, that is previous day high line, it will go and touch previous day low line. So ये concept होता है when it's a very narrow or it is looking like a one-liner CPR as well as ये दोनों जब बाजू-बाजू में रहेंगे ऐसा, whenever it's like this, then the good moment happens. And if it's in between these two lines, previous day high line and low line, in this situation of a CPR, so previous day low line से high line जाएगा या high line से low line touch करेगा, याद रखना. So maybe अगर इसके नीचे open हो गया, then it's a good go at the bottom to watch out. That's all. So this is technically what I can say. Or else if the candle is opening somewhere over here, if it doesn't break this line, 50% will be your first target, then CPR is your second target. If the candle is opening somewhere over here, that means 50% is your first target if it doesn't break R1 and this is your second target. Got it? That's the logic. And the narrow means अंदर रहा तो नाटक करेगा, दोनों के बाहर चलेगा, बॉर्डर के बाहर, then the movement will happen according to me. Narrow and ascending है, देखते कल क्या होता है अपना मार्केट. And in BN and support and resistance वही है जो लाइन है ग्रीन और हरा. नीचे का 19600 19700 is the support, 19900 ऊपर गया तो. So BN में it is little bit okay narrow only. So here the logic will be different, but यहाँ पे एक plus point है. It's an engulfing CPR. Engulfing CPR means a good movement can happen in the market. That's what BN is telling कल. So कल रोएगा नहीं, जल्दी जल्दी कुछ देके जाएगा. And here the logic is very simple. अगर पहला कैंडल यहाँ पे ओपन होता है, if it doesn't break the previous day high line or R1, it will go back to the CPR. Over here, if it doesn't break S1 or maybe previous day low line, it will go back to the CPR. That is the first candle opening trick of CPR. And the major support, 44 is a major support. 44 is a major support because of psychological figure. अगर उसको तोड़ के नीचे गया तो अच्छा गिरेगा, या तो उसके नीचे कल ओपन हो गया, then chances of dropping down might be possible. That's what I feel. Okay. So that was, like what can happen in the market, technically in the market. So shankically what I feel, I'll let you know. And one more thing. One guy was there. Kausik Bhaiya, हमारे Kausik Bhaiya. He was like, नीचे नहीं आ रहा है. अरे जबरदस्ती थोड़ी ना है. Just check the jail bar. Jail bar का volume अगर zero के नीचे आएगा, then only everything will go in a perfect mode. वो CPR था. CPR तोड़ा. I told you in the live. तो पहले just listen to me properly. ऐसा नहीं अंधविश्वासी नहीं. Don't be अंध भक्त of Shanky. Got it? सोचो समझो फिर संभाल करो. 10 दिन दिया तभी मुंह नहीं खोला. अपना ओल्डर चाचा ने टांग ऊपर क्या किया, अभी हो गया 3 बजे नीचे. That's what happens. So tomorrow what I'm feeling is, so tomorrow I'm expecting a big M pattern in the market. Is it clear? So tomorrow I'm expecting a big M pattern in the market tomorrow. That's what my expectation is. Whether it happens or whether it doesn't happen, I don't know. This is what my feeling is there of the market. Now everybody will tell 3 बजे F आया D आया, इसके लिए market गिरा. But I told you on Monday ना कि गिर सकता है. Got it? I'm expecting a big fall. It came at 3 o'clock. तो मैं क्या करेगा? So you should go with the Balbanda arrow. You should go with CPR logic. You should go with jail bar. And everything says yes, then only it is a yes. Or else if it's saying no, no means no. और jail bar को पकड़ के बैठे रहना, that will give the major game. Or else see the premium ऊपर जा रहा है, premium भाग रहा है कि नहीं, because the candle was going up, BN जा नहीं रहा था. So that is where it can just give an छोटा सा idea मिल जाता कि भाई नहीं जाएगा वो. Got it?
एंड हम्टी डम्टी पीपल आर आस्किंग सी लू या पी लू, अबे सामने सीधा एरो है, वहां पे रेनबो बोला टूटेगा तो नीचे आएगा, फिर भी रोते रहता है व्हाट इज हम्टी डम्टी, व्हाट इज हम्टी डम्टी। सो इनका कोई इलाज नहीं है। इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months टू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू आर रेगुलर इन माई स्ट्रीम देन ओनली यू अंडरस्टैंड कि मार्केट किधर जा रहा है। इफ यू आर नॉट रेगुलर इन माई स्ट्रीम ऑब्वियसली यू डोंट नो व्हाट आर माई ट्रिक्स एंड माई कोड वर्ड्स, याद रखना। So that's all for the days, guys. So meet you up tomorrow. And one more thing, tomorrow I'm expecting a good gap down, and then sudden reversal can happen in the market. Expecting a good gap down होना चाहिए, और sudden reversal मारेगा, मालूम नहीं किधर आता है वो, 44 या 44 के नीचे किधर भी जाएगा, फिर वहां भी बाउंस बैक मार सकता है अपना बाजार। And yes, 5.5 days to go for कोलकाता सेमिनार। वो क्यों गिरा, उसका लॉजिकल रीजन I will teach you in कोलकाता सेमिनार, why it came down. Got it? Take care, bye guys. पूछ लेना वहां पे। एंड कल हमारा चुपचाप बैठा है काला बगीरा, क्या पता कल पागल होएगा या परसों पागल होएगा। एंड रेड पैंथर आल्सो जंप लाइक अ रॉकेट, बट नोबडी स्पीकिंग अबाउट रेड पैंथर। बाय गाइस, सी यू एंड डू मैसेज मी एंड लेट मी नो कि सही था या गलत था। एंड डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनी डायग्राम और एनीथिंग, पहले देखो समझो उसके बाद ही अंदर घुसो। बाय गाइस, सी यू।